Okay, so hi everyone, this is your anchor Lakshmi from Team Pankhuri, and I would like to welcome all the participants present here. So hi everyone, as I said hi to all the lovely ladies and all the lovely participants present here. So I do expect कि सभी की तरफ से थोड़े hi and hello फटाफट आने चाहिए ताकि मुझे लगना चाहिए कि हाँ यार सभी लोग एकदम active हैं and they all are ready for today's wonderful session. So, Saloni, please let me know कि सभी लोग बता रहे कि नहीं कि they are ready for today's session or not. Because I don't have chat, so you have to tell me. या बिल्कुल. So अभी हम लोग को स्टार्टिंग से काफी सारे हाईज एंड हेलोज आ रहे हैं. लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं फॉर दिस सेशन. तो या वाओ. अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर सपोज हम एक वर्ड बोले सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स को बोलने के लिए कि कितने ज्यादा वो एक्साइटेड है हमारे आज के सेशन के लिए, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या बोलेंगे? तो सारे पार्टिसिपेंट्स जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव टू टेल वन वर्ड फॉर योर शोइंग एक्साइटमेंट फॉर टुडेज सेशन, देन व्हाट विल यू से? कम ऑन एवरीवन. एंड सलोनी प्लीज लेट मी नो, क्योंकि नहीं तो ऐसे सब बोलेंगे यार हमने तो कुछ भी बोले ही जा रही है. नहीं, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको. आप क्यों परेशान हो रहे? मैं आपके रहते परेशान नहीं हो सकती हूँ, बिल्कुल नहीं. तब ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यस, मुझे काफी सारे यहाँ पे चैट्स आ रहे हैं कि काफी लोग तो काफी रेडी है. स्पेशली सुमन मैम तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड. शी इज वेरी एक्साइटेड. शी हैज बीन कॉन्स्टेंटली टेक्सिंग कि हाँ मैं रेडी हूँ, आई एम रियली एक्साइटेड. एकदम हिप हिप पूरे कर रही है मैम. तो सृष्टि, आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली स्किन प्रेप के बारे में एंड नॉर्मल कुछ मेकअप सीखेंगे, राइट? हाँ जी, आज हम लोग कंप्लीट स्किन केयर पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट स्किन रेजिमे, हाउ वी गेट स्टार्टेड फ्रॉम द क्लेंजिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रिपरेशन, बी इट फॉर द क्लाइंट और बी इट फॉर योरसेल्फ. पूरा एक इन डेप्थ जितना अच्छे से हम प्रोडक्ट नॉलेज कितना ले सकते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. And other than that, हम minimal amount of products, मतलब I'm not going to use a lot of products. It is going to be very basic minimal makeup. So we are going to learn that with as least number of brushes as possible. So हम सिर्फ 3-4 brushes के साथ ही अपना complete makeup complete करेंगे. So that उन लोगों के लिए काफी beneficial है जो लोग complete एक brush kit नहीं ले सकते हैं. Being professional also कभी कभार लगता है यार खुद के ऊपर कितने brushes use करोगे. So okay, if you take 4 to 5 brushes and then you do your whole makeup and then get ready for your location. So it's perfect for the professionals also when they're getting ready for themselves, and also it's perfect makeup resume for somebody who gets ready for their workplaces, or in general they have to go to places and they have to get ready at least products possible. So आज हम लोग वो करने वाले हैं. So I hope everybody have joined. Yes, सृष्टि, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था क्योंकि ना क्या होता है जैसे कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ ब्रशेस, बट जो मतलब हम जैसे जो नॉर्मल इंसान होते हैं, जैसे मैं हो गए, सलोनी हो गए, तो आप लोग जो प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना, तो हम लोग को लगता है यार अब हमको पूरा लेना पड़ेगा फिर तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो नहीं बाबा, बीइंग अ प्रोफेशनल ऑल्सो हमें लगता है कि इतनी सारा मेकअप खुद के ऊपर कितने दिन यूज करोगे आप. 4-5 प्रोडक्ट्स रखने होते हैं, फिर वही ब्रशेस को आपको वॉश तो करना ही पड़ेगा, क्लीन तो करना ही पड़ेगा. तो खुद के ऊपर भी एज मिनिमल नंबर ऑफ ब्रशेस से कितना जल्दी अपन मेकअप कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्किन रेजिमे इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक परफेक्ट स्किन रेजिम काफी मायने रखता है फॉर डूइंग योर परफेक्ट मेकअप. बिकॉज अगर आपका स्किन प्रेपरेशन अच्छा नहीं है तो आपका मेकअप भी फाइनली अच्छा नहीं होगा. बी इट एन एक्ने प्रोन स्किन, बी इट अ स्किन टेक्सचर विच इज वेरी ड्राई. हम लोग स्किन टेक्सचर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, एंड देन इन डेप्थ हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि हम कौन सा प्राइमर अपने क्लाइंट के यूज करेंगे या फिर अपने खुद के लिए यूज करेंगे. तो हम थोड़े से फन एक्टिविटीज करेंगे. एंड आई होप सलोनी फटाफट से मुझे सबके कमेंट्स ऐड अप करेंगे, बताएंगे कि what is everybody's skin texture, सबका क्या texture है, what preferences do they have, in general क्या issues होते हैं with makeup or with skin preparation. So yes, Saloni, have everybody joined the text and joined the class? Yes, I believe a lot of people have joined. So, and it's already 5, so I think we can start with the session. I will just give them a little introduction and then we will finally start with the class. Okay, perfect. Okay, so Lakshmi, आप कुछ बताना चाहोगे एक बार? सॉरी, मैं बोल रही हूँ आप कुछ लास्ट में एक बार बोलना चाहोगे, उसके बाद फिर मैं प्रॉपरली क्लास का इंट्रोडक्शन वगैरह देके स्टार्ट करूंगी. आप स्टार्ट करो, मैं क्योंकि यहीं पे रहने वाली है एंड आई विल बी एट लास्ट.
तो मैं लास्ट में थोड़ी बातें करूंगी हमारी ऑडियंस से। ओके ओके, बिल्कुल। या ओके, तो तो just give me a minute. टेक ओवर। So, hi everyone, this is Saloni, your host from Team Pankhuri, and I hope you all are doing absolutely great. So, जैसा कि आपको अभी सृष्टि ने एंड हमारी एंकर लक्ष्मी ने बता ही दिया है कि आज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर स्किन रेजिमे, यानी कि आप कैसे एक प्रॉपर स्किन को प्रिपेयर करते हैं अपने मेकअप से पहले, एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे अपने एक बेसिक मेकअप के बारे में, जो कि मतलब हर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्किन्स होती हैं एंड डिफरेंट टाइप के स्किन पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे. Now, before starting the session, there are just few things I want to tell you all about, and then we will properly start with the session. Okay? So the very first thing is that we are going to have the session in both Hindi and English, so that nobody has a problem with the language here. Okay? हम पूरा सेशन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में कवर करेंगे, ताकि किसी को भी लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम ना हो. Second thing is, all the products that Srishti will be using have already been uploaded on the app. So please don't worry about the products and everything. You will get the knowledge about it on the app also, and Srishti will be talking about them too in the session. तो जो भी प्रोडक्ट सृष्टि यूज करेंगी वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐप पे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं. प्लस कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज करता है, वो तो सृष्टि सिखाएंगी आपको. After that, if you want the recording of the session, then this recording will only be available on the app, and for that recording, you will have to pay us 5 rupees and you will get the lifetime access for it. Okay? तो हम लोग आज जो सेशन हो रहा है वो आपका उसकी रिकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर मिलेगी, एंड उस रिकॉर्डिंग्स के लिए आपको 5 रुपीज़ जो है वो हमें पे करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको इसकी पूरी की पूरी जो रिकॉर्डिंग है लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी. After that, you will also get a PDF there where all these steps are already written down, so that if in case you forget something or you have forgotten some of the other points, you can always go to the PDF also and everything could be sorted. तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो PDF में भी गिवन है, तो अगर आप चाहें तो ऐप पे जाकर PDF भी एक बार चेक कर सकते हैं. ओके, so yes, without wasting any time, let's get started with the session. Over to you, Srishti. Okay, so thank you for the introduction, Saloni. So let's get started with the skin preparation first. So for first and foremost, I'm going to teach you about the skin textures, and then we are going to talk about the skin preparation. So skin textures के लिए सबसे पहले I want to do a fun activity with you guys. क्या करना है? We are going to take our hand and we are going to touch our cheeks prior, and उसके बाद we are going to touch our T-zone. इसको हम T-zone कहते हैं. Okay? So we are going to touch these two areas with two different fingers, and you have to see कि दोनों fingers में से दोनों oily कौन सा है. And if in case you generally see oil on both the fingers, that means that you're from the oily category. If you feel that दोनों पे oil नहीं है, then you're from the dry category. और अगर आपको combination side, अगर आपको T zone या फिर किसी एक section में oiliness है, then it is a combination skin texture. So yes, that is about the skin texture. We have 3 different categories of skin texture. We have the oily, we have the dry, and then we have the combination. ठीक है, जो बीच में आ जाता है, which is a combination of dry and oily, जो कि थोड़ा सा न्यूट्रल वे में रहता है. वी जनरली ट्रीट इट लाइक मोर ऑफ अ ड्राई स्किन टेक्सचर. वी प्रेफर गोइंग विद द मोर डोमिनेंट साइड ऑफ द स्किन. एंड देन एक और क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट अबाउट द सेंसिटिव स्किन टेक्सचर. वी हैव दैट. So it works as a subcategory with the texture. So when we talk about a sensitive skin, it can be a oily sensitive, it can be a dry sensitive, and it can be a combination sensitive. So the sensitive skin can be present with each and every texture. So आपने जैसे अपना texture देखा, at the same time, if you generally use different products and you end up getting reactions from those products, or it takes a lot of time for you to get more settled with different products. So generally you see a lot of reactions due to different makeup products, so be different skin texture products, या फिर थोड़े से एक्सपोजर के बाद आपका स्किन बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, then definitely darling you are from the sensitive skin texture. So be it the oily one, be it the dry one, or be it the combination one. Sensitive आप तीनों में से कोई भी हो सकते हो. So जल्दी से in the comment box सब अपने अपने एक बार cheeks and T-zone check कीजिए. If you're from the oily, if you're from the dry, or from the combination side, so drop it in the comment box so that we can get started about how to treat them or how to create a regime according to your particular texture.
So yes, Saloni, are they texting it down? Yes, so I can see a lot of comments here telling that they are from the oily skin family. I can see a lot of comments for the oily skin family. कि काफी Okay. सारे लोगों की जो This skin can be also possible because अभी काफी गर्मी है, तो गर्मी में ज्यादातर लोग sweat a lot. So please जरूर confuse मत होइएगा कि is it the sweat which you are feeling onto your forehead or around your nose or around your cheek, or is it that oil? So we have to always know the difference as a makeup artist or as a self consumer. You should always know कि जो आपकी cheeks पे या फिर आपके face पे जो आपको constantly दिख रहा है वो oil है कि water है. So every time you touch your skin, you have to move it around your fingers. You have to always emulsify it around. And if you still feel that it is still sticky, then definitely it is from the oily section. And then if you feel that it gets dissolved बहुत easily, it has got evaporated, then definitely it was sweat. गर्मी के कारण से भी काफी स्वेटी फील होता है. So yes, सबने अपना अपना स्किन टेक्सचर पहचान लिया, तो हम फटाफट से देखेंगे कि हमारा रिजीन कैसे बनेगा. Yes, Saloni. Srishti? Yeah, Yes. so I can see a lot of comments about their skin, but I will quickly translate everything in Hindi once because there was not Cool. English. Okay. तो सबसे पहले किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी भी स्किन रिजीम को बनाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्किन है वो कौन से टाइप की है. तो बेसिकली 3 टेक्सचर्स होते हैं, ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन. तो इसको पता करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपना फेस आप वॉश करिए, उसके बाद अपनी एक फिंगर लीजिए, उसको अपने ऐसे चीक्स पे या गालों पे रब करिए एंड दूसरी किसी और फिंगर से आपका जो टी जोन एरिया है, टी जोन एरिया का मतलब है कि आपका माथा और आपकी जो नाक होगा वो वाला जो एरिया है वहां पे आप उसको रब करिए एंड देन अपने दोनों फिंगर्स को देखिए. इफ इन केस आपको किसी दोनों फिंगर्स में ऑयल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आप ड्राई स्किन के हो. अगर आपको दोनों में ऑयल दिख रहा है, इसका मतलब है ऑयली स्किन के हैं. एंड इफ इन केस आपको एक साइड पे ऑयल दिख रहा है एंड दूसरे पे ऑयल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप एक कॉम्बिनेशन स्किन में आते हो. ओके, एंड इसी का एक सब कैटेगरी होता है सेंसिटिव स्किन. सेंसिटिव स्किन का मतलब होता है कि आप कोई भी स्किन रेजीम फॉलो कर रहे हो या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपको किसी तरीके का रिएक्शन मिल जा रहा है बहुत इजीली, तो उसका मतलब है कि आप एक सेंसिटिव स्किन के टेक्सचर में जाते हैं. एंड सेंसिटिव स्किन जो है वो किसी की भी हो सकती है, मतलब ऑयली सेंसिटिव भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव भी हो सकती है एंड ड्राई सेंसिटिव भी हो सकती है. तो अब आपने पता कर लिया कि आपका स्किन टाइप क्या है. अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप अपना स्किन केयर कैसे वो करते हैं, डिजाइन करते हैं. क्या सृष्टि? चलिए, so whenever we are going with the skin texture, be it any of those, the pattern which we are going to follow, generally बहुत question आता है कि मैम we have all the products in our vanity, we have bought these expensive toners, we bought these cleansers, सब इतना सारा expensive products मैम लेके तो रखा है, but pattern क्या है? टोनर को पहले लगाएं, क्लेंजर को पहले लगाएं, शुड बी अप्लाई अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर ऑन माय स्किन, मैम मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा लें, या फिर व्हाट टू डू? So the perfect pattern mnemonic which we have created is called CTMP. So CTMP एक mnemonic है which we generally follow, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हैं और सबको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो सबसे बेसिक जो है mnemonic, that is CTMP. So C से it goes for cleanser. So cleanser is your face wash या फिर जो हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं. So this can be a oil based cleanser also and a water based cleanser also, soap based cleanser also. So oil-based cleanser generally we use to clean up the makeup products, whichever the residues are onto our skin, because oil-based cleanser helps a lot for removing the makeup. And then we talk about the water-based cleanser, or the soap-based cleanser, where we generally use it for more oilier skin to remove the oils from the skin. Okay? So for the people who are more towards the side of oily skin, जिन्होंने अभी अपना skin texture touch किया, they realize कि okay ma'am, I have oily skin texture, then definitely you have to go with soap-based cleanser. सोप मतलब सोप नहीं पूरा, यू हैव टू गो विद द वन जिसमें बहुत सारा फोम क्रिएट होता हो. सो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग इट अंडर द वाटर, आपको बहुत सारा झाग दिखने लगे, तो उसमें इमल्सिफिकेशन फैक्टर हो. ठीक है. एंड देन फॉर समबडी हु हैव एक्सट्रीमली ड्राई टेक्सचर, यू डोंट हैव टू यूज अ सोप बेस्ड क्लेंजर, यू हैव टू यूज अ मिल्क बेस्ड क्लेंजर. सो मिल्क बेस्ड क्लेंजर कौन से होता है? विच आर वेरी मॉइस्चराइजिंग फॉर द स्किन. तो आप सेटअपिल यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज ब्रांड्स लाइक क्लिनिक. You can find a lot of different cleansers if you would type milk based cleanser in general on any app, be it Amazon, Nykaa or any of those. अगर आपने फटाफट से एक बार सर्च किया,
milk based cleanser. These are the perfect ones. I prefer using Cetaphil for my clients. You can find it on Pankhuri app. So एक तो हो गया हमारे लिए ड्राई स्किन टेक्सचर के लिए, दैट इज मिल्क बेस्ड क्लेंजर. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑयल बेस्ड वन, जो कि वी यूज फॉर क्लीनिंग अप द मेकअप, और यू कैन यूज माइसेलर वाटर ऑल्सो, because that's perfect for cleaning up your makeup, specifically beat your eye makeup, because we don't try to clean it all with the face wash, क्योंकि काफी harsh हो जाता है onto the skin. So we go with the cleanser, which is either milk based or soap based. And then either ways, if the skin is combination and we don't want to experiment a lot, you would always go with the milk based cleanser, because it is just going to hydrate the skin. Okay, it is not going to make it more oilier. It is just going to hydrate the skin. Okay, so for now that was about the cleanser. Now let's talk about the toner. So एक बहुत बड़ा misconception है कि मैम toner से क्या होता है, pores close हो जाते हैं. No, toner doesn't help you with closing your pores. It is not going to help you with brightening your face or with anything in general. It is going to just balance out your pH. तो स्किन का pH काफी इम्बैलेंस हो जाता है जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, फेस वॉश करते हैं, वी आर यूजिंग डिफरेंट सोपी प्रोडक्ट्स ऑन टू आवर स्किन. pH बहुत इम्बैलेंस हो जाता है. Beat your skin, beat any part of your body, beat your armpits, beat any area of your body, pH imbalance is very normal. But to bring it back to its normal pH, to bring it back to its similar basic pH, we have to use a toner. But you also have to look for the cleansers. Already अगर balance out कर रहा है वो pH, because these days the cleansers are very modified. So you can skip the toner part, but if in general you are using a toner, use an alcohol, non-alcohol based toner. ठीक है, alcohol based toners हम लोग नहीं use करेंगे, because they are extremely drying and also very harmful for the skin. They tend to look very nice onto your skin, they feel very refreshing onto your skin, but they are alcohol based. They are going to create more abrasions onto your skin. They are going to cause more issues. So हम alcohol based toners बिल्कुल नहीं use करेंगे. So that was about the toners. And then let's talk about the moisturizer. So moisturizer is all about hydrating your skin. ठीक है, so be it the person who have a dry skin texture or be it somebody with an oily texture. So अगर हमारे oily भी है, dry भी है, we always have to make sure we are applying the moisturizer. But मैम moisturizer लगाते हैं, मेरा oily है, बहुत oily हो जाता है, तो आपने अलग टाइप का मॉइस्चराइजर यूज करना है. यू हैव टू मेक श्योर द काइंड ऑफ द टेक्सचर ऑफ मॉइस्चराइजर व्हिच यू आर अप्लाइंग ऑन टू योर स्किन इज मोर लाइटर. So for somebody who has an oily skin texture, you have to go with a gel-based moisturizer. So these days you would find a lot of different varieties into the market. You can see the Pond's gel-based moisturizer. You can see the Dermapeak Cloud cell by cell restoring moisturizer. You can look for Clinique. You can look for Moisture Surge by Clinique. And then there are plenty options you can go for. ठीक है, so आपने moisturizing skip नहीं करनी है if your skin is oily or if it tends to break out a lot. आपने अपना moisturizer का hydration level change करना है. ठीक है, उसका emulsifier जितना है उसमें quantity, उसमें oil जितने हैं आपने वो कम कर देना है. So let's use a gel based one. And for somebody who have a dry skin, आपने तो वैसे ही बहुत thick based moisturizer use करना है. You have to go with a very thick application of a moisturizer. Make sure it's very well hydrated, because if in case you have a drier skin and you haven't hydrated your skin well, that can lead to cracks in your makeup, and that can lead to very off-going concealers and foundations. आपका base इतना clean नहीं बनेगा. So hydration is a very important key. Even if you are not doing your makeup, even if you are going to do your makeup, if you want your skin to glow, you have to apply plenty amount of moisturizing to your skin. So I hope I'm clear about the part CTM. Yes, Saloni, was I bilingual? If in case I've left any point, can you just explain it in Hindi? Yeah, sure. So अभी हम लोगों ने अपना स्किन टाइप समझ लिया था. नेक्स्ट आपको अपना स्किन रिजीम बनाना होता है. तो जब हम स्किन रिजीम बनाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम CTMP. CTM प्रोसेस जो होता है ये बेसिकली आपके स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है एंड आपको एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड करता है अपना मेकअप स्टार्ट करने से पहले. सो CTM का फुल फॉर्म क्या होता है? C का मतलब होता है क्लेंजिंग. क्लेंजिंग का मतलब होता है कि आपका फेस वॉश. सो अब आपकी क्योंकि डिफरेंट स्किन टाइप है, सो डिफरेंट स्किन टाइप के लिए डिफरेंट टाइप के क्लेंजर्स अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक होता है ऑयल बेस्ड क्लेंजर. ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स जो होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं आपके मेकअप को हटाने के लिए. ओके, इफ इन केस किसी की स्किन जो है वो ऑयली है, सो आप क्या करोगे, आप वाटर बेस्ड या फिर सोप बेस्ड जो क्लेंजर्स होते हैं उनके साथ जाओगे.
एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मिल्क बेस्ड क्लेंजर्स के साथ जाएंगे, एंड अगर कॉम्बिनेशन है तो भी आप मिल्क बेस के साथ ही जाओगे। इफ इन केस किसी की सेंसिटिव स्किन है, इन्हीं में लिया जाए तो फिर जो सेंसिटिव स्किन के लिए जो क्लेंजर्स आते हैं, लाइक व्हाट वाज इट कॉल्ड सृष्टि? Hypoallergic products. हाइपरएलर्जिक प्रोडक्ट्स, राइट। सो अगर आपकी मान लीजिए कि सेंसिटिव ड्राई स्किन है We are तो going आप to talk about the sensitive skin. Don't worry about that. अभी आप सिर्फ ओके ओके CTM ओके को explain कर दीजिए. हाँ जी. ओके। सो फिर यस, अभी ये हो गया आपका क्लेंजिंग वाला पार्ट। उसके बाद फिर हम आते हैं टोनिंग वाला। टोनर का क्या मतलब होता है कि टोनर का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि टोनर्स आपके पोर्स को क्लोज कर देता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टोनर बेसिकली आपको हेल्प करता है आपका पीएच मेंटेन करने में। जब आप अपने फेस वॉश करते हो तो जनरली आपका फेस का पीएच जो है वो चेंज हो जाता है, तो हमें उसको वापस से बैलेंस आउट करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग टोनर्स यूज करते हैं। ओके, तो सी टी हो गया। उसके बाद आता है एम, एंड यस गुलाब जल एज अ टोनर आप यूज कर सकते हो। एम में क्या होता है? एम का मतलब होता है मॉइस्चराइजेशन। तो मॉइस्चराइजेशन जो होता है वो भी आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज करेंगे। सो अब आपका स्किन कैसे, मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप जेल मॉइस्चराइजर्स के साथ जा सकते हैं। ड्राई है तो जो हेवी मॉइस्चराइजर्स आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत पड़ेगी, सो आप इसके लिए हेवी मॉइस्चराइजर्स यूज करेंगे। इफ इन केस आपका ऑयली स्किन टाइप है तो फिर आप वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो आप यूज कर Gel सकते हैं। based. वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, Okay. यस यस। So let's talk about the last point, which was the protection. So which is going to protect us from the skin exposure. So skin exposure कौन से हो गए? UVA rays, UVB rays, and all the rays which can harm us in general. So the most important product into your skin regime for the morning would be your protection, which is going to be your SPF. So skin protective film, which you can apply onto your skin. You have to apply it almost every day, almost, yeah, every day into your skin regime, and have to make sure that you are applying a good thick layer of SPF onto your skin. अब ये जनरली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैम SPF लगाते हैं व्हाइट कास्ट आ जाता है, एक एशीनेस सफेद जैसा दिखने लगता है, गोस्टी फेस दिखने लगता है. That means that darling you're using the wrong SPF. You have to go with an SPF which blends into your skin. So same way around, जैसे moisturizer we can see in different textures, SPF भी काफी textures में आते हैं. What I personally recommend for my clients and also for my students are IPSA. So IPSA actually UV करके there is this gel based SPF which is very light in texture and also it's non-comedogenic, so it is not going to cause more comedons, more acne around onto the skin, and at the same time it won't be very oily. So you can apply a good amount of it, a good as in 3-finger amount of it, अपने 3 layering पे finger करना है, and then you have to blend it around onto your skin. Make sure you're applying it on your neck, onto your hands, and then hands take some extra, but 3 fingers at least to your face and to your neck. You have to apply as good amount as possible, and then reapply it in every 2 hours if you're going in sun. Okay? You have to make sure you're using an SPF. The perfect one which you can go for is 45 because it gives you at least 80% of protection from the sun, or at most like to 89 also at times. So yes, that is one of the best products you can go with. Also, Saloni, do we have any queries coming from the students? Yes, we do have a lot of queries coming up. So I will just repeat this protection wala, and then I will start taking the queries, and I think we will start with the makeup too. Okay. So आपने अभी अपना CTM कर लिया। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है हमारे स्किन रिजीम में वो होता है प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन जो होता है यानी कि आप SPF अप्लाई करोगे अपने फेस के ऊपर। जो आपका SPF होगा वो एटलीस्ट 45 का होना चाहिए, मतलब 45 जो होता है वो बहुत अच्छा SPF होता है। एंड आपको डे टाइम में ही SPF अप्लाई करना है, रात में मत अप्लाई करना वरना अजीब सा ही दिखेगा। ओके, जस्ट इन द डे टाइम यू विल हैव टू अप्लाई द SPF, एंड वो 45 का होना चाहिए, मतलब 45 SPF का होना चाहिए। उसके बाद एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है व्हेन इट कम्स टू द SPF इज दैट पीपल अप्लाई इट एंड दे सी अ व्हाइट कास्ट ऑन द फेस आफ्टर अप्लाइंग इट। सो इन दैट केस दैट सिंपली मीन्स दैट यू आर यूजिंग द रॉन्ग SPF. The same way moisturizers have different textures, SPF too have different textures. So there are SPFs which come for the oily skin, there are ones that come for the dry skin. You need to buy the one that suits your skin type and
You will not get that white cast on your face. Okay? Okay. So I think we can keep up with the queries. Yeah, sure. We'll start with the queries. Just give me a minute. Okay, so there was one query that was coming a lot. That was ki, ma'am, I do all my makeup and I do my skincare regime. But what happens is that after removing my makeup, I end up getting lot of acne or pimples on my face. What could be the possible reason for it? Okay, so probably you are allergic to one of the ingredients from your makeup product. It can be one of the mineral ingredients because zinc allergy काफी लोगों को होती है. Be it also people are also allergic to other ingredients from that product. So what I would suggest you here is use products which are hypoallergic. So I mean good brands which you can go for are Clinique. तो मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ. So there is a possibility कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो आपकी स्किन पर, इनमें से कोई आपके ऊपर दे आर लीडिंग टू मोर एक्ने, वो एलर्जिक रिएक्शन दे रहे हैं वो प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं. तो इसमें क्या कर सकते हैं आप हाइपोलर्जिक प्रोडक्ट यूज कीजिए जो कि आपको कॉमिडॉन्स और क्रिएट ना करे. ऑल्सो आप एक बार देखिए कि आप ट्रिगर देखिए कि कौन सा प्रोडक्ट, मे बी आज स्किन केयर हटा के सिर्फ मेकअप एक बार पैच टेस्ट कीजिए अपनी स्किन पर. हो सकता है कि एवरी डे जस्ट लुक फॉर द पैटर्न विच इज मेकिंग इट reoccur the acne. Probably possibility 90% यही हो सकता है that you are allergic to one of the ingredients from your product. Yes, Saloni, can we take any other questions? I Yes. hope the query is cleared. Also, जो लोग questions पूछ रहे हैं, please drop in a yes and also maybe a comment that आपका query complete हुआ, आपको समझ में आया. If in case आपको नहीं समझ में आ रहा है, we are going to re-explain it in your way. So, आप please drop in a comment if in case it's not clear to you. Yes, Saloni, can we take the next query? Yeah. So there's a question that ma'am, winters में मेरी स्किन ड्राई हो जाती है एंड समर्स में ऑयली हो जाती है, फिर मेरी कौन सी स्किन टाइप होगी? ओके, सो ये काफी नॉर्मल है. वट एवर यूर फेसिंग राइट नाउ कि आपका विंटर्स में थोड़ा सा ड्राई हो जा रहा है, समर्स में इट इज गेटिंग ऑयली, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल. But you have to treat it, you have to keep your skin regimen according to how your skin texture is in that particular season. And also same goes for the makeup. I'll explain about that later. But if in case it is more oily in the summers, you have to use the oily skin regimen in the summers. And then when it comes to winters, you have to use the dry skin regimen in the winters. So you have to see that what kind of texture you're treating at that very time and not treat it in the same way how it is fabricated for others. You have to self-tailor the whole creation of your whole regime. You have to see what is working for you, what is not, and it is going to take a lot of time of yours. And if in case you're getting reoccurring acne because of certain products, be it anybody here, you have to see your dermat. आप डर्मैट से बात कीजिए, टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस, सी व्हाट इज ट्रिगरिंग योर एक्ने, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द रीजंस जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर लिए बट मेरा एक्ने नहीं जा रहा, बिकॉज दैट can be because of a lot of reasons. But be it winters, be it summers, whatever skin you're facing right now, you have to treat it in that particular way. So if my skin is dry in this month, I have to treat it to hydrate this skin in that way. I have to treat it to be a dry skin for this month. Yes, Saloni, can we take the next query? Yeah. So somebody is asking that why is moisturizer important? What does it actually do? Okay, so I'll explain it in a very easier way. So whenever we are applying watercolors onto a wall or maybe onto a canvas, so if in case we haven't applied any water before applying the watercolors onto the canvas, water फैलेगा नहीं, right? It will make it very dry. या फिर अगर मैं कहीं डेली अगर मैंने पेड़ों को पानी नहीं दिया, the soil will dry out. Same way it works around for the skin also. If we are not properly hydrating our skin, it will get dry. And also it will start creating more oils, and that will lead to more issues. So if we are not hydrating our skin by apt amount and not nicely hydrating our skin every day, then that is going to cause us issue. और ज़्यादा oil secrete होने लगेगा. It is going to act that way because अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, your skin itself will try to control it over, and that can lead to more issues. I hope I'm clear about that. Let's take another query, Saloni. Shall we? Yeah. So there's a question कि मैम oily skin type में कौन से SPF use करना चाहिए? Like what type का? So I would suggest you to use a gel-based SPF. So as I said, Acne UV would work perfectly for you. You can use Last Shield also rather than using Acne UV because these are the perfect ones which one can use. These the dry texture also. What I would suggest you is
use a silicon-based SPF, and before that, use a good amount of hydration. So you can always balance it out. So अगर combination skin है, but as I said, starting में आपने एक oily based foundation, एक oily based cleanser use कर लिया, so later with the moisturizer you have to make sure that you are using a more lighter moisturizer. So you always have to make sure that you're not keeping it in the way how it was taught to you. You're tailoring, self-tailoring the whole product. So आप देख रहे हो कि what is working for you and what is not, and then working around your skin texture accordingly. So I hope I'm clear about that also. Just drop in a yes if everybody is getting all the sense here, and also सबको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हम लोग अपने products pick करने वाले हैं. And yeah, till then let's quickly switch to the model and get started with the makeup. And yes, Saloni, till then can you follow up with the queries? Yeah, sure. Okay. So, Shweta, for your question, yes, even if you are at home, you need to use the SPF. So remember, ladies, even if you're at home, you need to use SPF. आप अगर Just in घर the पे हो, daytime, रात पे नहीं use करना हाँ, है, just in the रात daytime. में नहीं, दिन में अगर आप घर पे हो तब भी आपको SPF यूज करना है. And Hanji, also a lot of people forget about removing the SPF. तो लगा तो लिया है, but acne कब होगा अगर आप SPF remove नहीं कर रहे हो time पे. So that is also going to lead to a lot of issues. So आपने हमेशा you have to make sure whenever you are applying SPF, you have to also remove it. Yes, so we have our model Tanya with us, and we are quickly going to start with our makeup. Until then, yes, Saloni, can we still follow up with the queries? yeah, there are 1 or 2 queries left. So one is that how many times do we need to do the CTM process? Okay, how many times? You just have to do it once in the morning, just CTMP, and then in the night you have to do CTM. And you can always add on to a couple of treatments. These days we're using some proper treatments like retinol, vitamin C. So what I would suggest you is start using vitamin C in the morning. It is going to help you a lot with your aging and also brighten up your skin. So ये कुछ treatments है जो आप use कर सकते हो for your morning and night regime. हाँ जी. So let's get started with the face. So she have already prepped her skin with CTMP. So just because it's a daytime makeup, she have also applied some protection. And for the soapy brows, I'll tell you this very easy trick. And इस complete section में everybody might feel कि ma'am, you're not using a lot of products, because we were supposed to keep the session by as limited number of products as possible. So yes, we are not going to use a lot of products, and also the products which we are going to use are not going to be very expensive. ठीक है? So चलिए. So for the first, I am using this soapy brow. So ये कुछ भी नहीं है. This is some glycerine soap. You can use Pierce also here. ठीक है, आप कोई भी soapy brow soap use कर सकते हो. You just have to make sure it's glycerine based and it's hypoallergic. So it should not cause any issue. आपने menthol का या फिर कोई और base soap नहीं use करना है. You can either use a baby soap or you can use a glycerine. Pierce is one of the best options when it comes to using soapy brow. ठीक है? So आपने क्या करना है? I've already wetted this up. What I'm going to do is I'll scratch up the product onto a spoolie. So either you can just add a bit of Duraline or some water. What I would suggest you is to apply some water. And yes, till then, Saloni, do we have any queries? Yes. So just give me a minute. Let me just repeat it once and then we'll move to the queries. तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मेकअप के साथ. तो मेकअप में हम लोगों ने CTMP प्रोसेस जो अपना है वो पहले से करके रखा है. एंड मेकअप जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्राउज से स्टार्ट करेंगे. तो ब्राउज में हम लोग क्या करें, आज हम लोग सीखने वाले थे सोपी ब्राउज. तो सोपी ब्राउज में आप कोई भी एक ग्लिसरीन बेस्ड सोप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सृष्टि यहाँ पे पियर्स यूज कर रही है. ठीक, तो आप एक कोई भी अच्छा सा सोप जो ग्लिसरीन बेस्ड होगा वो लीजिए, उसको हल्का सा वेट करिए एंड एक स्पूली की हेल्प से आपको अपने ब्राउज को ऐसे थिकन अप करना है. Okay. So first and foremost, what we are going to do is we are going to brush them upwards, all the hairs. Okay. What I'm doing is I'm brushing them upwards. They might look very bushy, and this is one of the perfect options for somebody who don't like a lot of product into their brows. They just need to style their brows. Here we might need a bit of product to fill in the brows. Quickly zoom in a bit more. Hanji, you can see that I have brushed the brows just a bit upwards.
तो अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपने ब्राउज को अभी एकदम ऐसे ऊपर की तरफ ब्रश किया है. ओके, हम लोग ने अभी और कुछ नहीं किया, बस उनको ऊपर की तरफ ब्रश किया है. एंड अभी इसके बाद हम इसको फिल इन करेंगे. ठीक है, they might look funny, but what we have to do next is we have to carve and shape it out. So ये वाला section we have to go straight and then downwards we have to create an arc. We are going to go straight and then we are going to go downwards. तो आपने देखा सबसे पहले हम लोगों ने उसको ऊपर की तरफ किया एंड देन उसके बाद हम ऐसे स्ट्रेट गए एंड देन नीचे की तरफ आए. यानी कि हम लोगों ने अपने ब्राउज को yes you can follow him. I couldn't hear you. Yes, Saloni. या तो बस हमें अपने ब्राउज को जैसे हमारे नेचुरल शेप है उन्हीं शेप में वापस से लेके आना है. ये सृष्टि. Okay, so as I followed the natural shape you can see a better lift. Same we are going to do to the other side. Just don't overpress the product. Make sure that you're styling properly. Don't use hairsprays rather than using the brow soaps. हमने soap इसलिए किया है because it keeps the product stiff and this is a very in way of doing the brows because they make it look very natural. Lifted effect आ गया. Now every empty space which we can already see into the brows we are going to fill in with some product. So here I did it with a spoolie and with some Pierce glycerine soap. You can go with any glycerine based soap. मैंने इसे एक tin के अंदर डाल दिया. You can also buy it from Sephora. What I would suggest you is a more pocket friendly option is that do it at home. Just melt it around a bit of glycerine and then yeah, that's the best way you can follow. Yes. So Saloni, can you explain it in Hindi? Yeah, sure. तो हम लोगों ने अभी बस अपने ब्राउज को अच्छे से शेप कर दिया. नेक्स्ट हम अभी इनको फिल इन करेंगे. नाउ आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप जो भी सोप यूज करेंगे वो एक ग्लिसरीन बेस्ड सोप होना चाहिए. एंड फॉर एग्जांपल जैसे पियर्स वगैरह है, तो पियर्स एक ग्लिसरीन सोप बेस्ड है प्लस वो हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट है. यानी कि अगर किसी की सेंसिटिव स्किन है तो वो उनको किसी भी तरीके से हार्म नहीं करेगा. तो ऑलवेज यूज प्रोडक्ट जो किसी को भी हार्म ना करे. इसीलिए आप पियर्स या फिर जो बेबी सोप्स होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं. ओके, या फिर सेफोरा वगैरह अगर आपके आसपास है तो अगर आप सेफोरा में जाओगे तो आपको वैक्सेस मिल जाते हैं या ऐसे सोप बेस के आजकल वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आप वो भी बाय कर सकते हो. बट सबसे जो पॉकेट फ्रेंडली है होता है वो ये नॉर्मल सोप बेस ही होता है. ओके, Shushi, your voice is very low. Yes, am I audible now? No, your voice is very low. Is it? I think you are audible very clearly. Yeah. It is still very low. Yeah, am I audible now? No, not yet. I think there is some issue with your AirPods. Sorry, am I audible now? Yeah, you are still audible now. Like you're fine. Yes, Saloni, am I audible now? Yeah, you're audible now. Now you're not audible too. My God. I think you need if you just like आप अपना AirPod वापस से connect कर लो ना. I think it will be fine. Sorry, Saloni, you're not audible to me. Sorry. Just a sec. Yes, am I audible now, Saloni? No, Shushti. No, she's not audible. Okay, so till Shushti is trying to connect her AirPods, till then. Anji, now you're audible. Okay, I'm audible now, right? Yeah, and am I audible to you? Yeah, you're absolutely audible to me now. Charlie. So to fill in the spaces between the brows, we are going to use a dual pencil. So I'm using two different tone pencils. So you can go with any brow pencil here, whichever works for you as per the shade. I am using the Krylon dual color pencil. So here we have a darker color on one side and the lighter brown on the other. I have mixed up the color and you only have to fill in the spaces which are empty. Okay. So overfill nahi karenge. We are just going to fill into the spaces which are empty, and also we have to make sure that. Sushi, your voice is again not audible. I don't know what is the issue coming.
ओके, तो अभी व्हाट वी वर डूइंग इज कि अभी हम अपने जो एरियाज हैं जहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि एम्प्टी स्पेसेस हैं, हमें उन्हें फिल इन करना है। तो फिल इन करने के लिए आपकी बेसिकली जो आपके ब्राउ का वो होता है ना, कलर होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने ब्राउ पेंसिल यूज करोगे या फिर आप ब्राउ पॉमेंट्स जो होते हैं वो यूज करेंगे। एंड जो एरियाज में आपको स्पेस दिख रहा है सिर्फ वहां पे हम फिल इन करेंगे। हमें ओवरफिल नहीं करना है, बस जिन एरियाज में हमें स्पेस दिख रही है सिर्फ उन एरियाज में हम उनको फिल इन करेंगे। Okay. एंड आप Am I किसी audible? भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। यस सृष्टि? Yes, am I audible now? या यू आर एब्सोल्युटली ऑडिबल। Shali. So now I'm just filling in the brows. Until then, Saloni, can you follow up with the queries which are coming from the students? Yeah, sure. So there's a question. This ma'am, I don't have any pimples on my face right now, but I was having them before and now they have left the dark spots on my face. Whenever I try to hide them with the concealer, they are all over my face and do not look like a natural makeup. Mm-hmm. Okay. So what you have to do is either neutralize those dark spots, and if they're extremely dark onto your skin, what you have to do is use a very lighter coverage of orange, or if they're extremely dark as compared to that also, you would use a darker orange. You're just going to color correct those dark spots, and that would do. Chaliye. So now I'm just going to brush in the product, which is blend it off. तो अभी हम लोगों ने बस अपने जो एरियाज हैं उनको फिल इन किया। फिल इन करने के बाद स्पूली की हेल्प से हम लोग वापस से उनको इवनली अपने पूरे ब्राउज में स्प्रेड इन कर देंगे ताकि एक हमें नेचुरल दिखते। आई विल क्विकली Okay. रिपीट So for summary, Just okay. a second. Till I then, will just repeat that color correction वाला one in also, Hindi. yeah, sure. तो यस, अगर आपके फेस पे काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको उनको कलर करेक्ट करना है। तो डार्क सर्कल्स के लिए आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करेंगे। तो एक बहुत मतलब हेवी ऑरेंज मत यूज करिए, लाइट मतलब लाइट कवरेज का ऑरेंज यूज करिए एंड देन उस पे ऑरेंज अप्लाई करके उसको अच्छे से मिक्स करिए, यानी कि ब्लेंड करिए एंड देन उसके बाद आप अपना मेकअप करोगे तो आपका वो जो ब्लैक डार्क सर्कल्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। Yes, Rishi. Chale. So now for the extra hair, as we can see, there are a lot of extra hairs, and at the same time, it is making our brows look more thicker. And to make it look more sleeker, what we are going to do is we are going to follow a technique. You can skip this technique if in case your brows are very bushy and you have already got it done nicely threaded. You can skip the step, but abhi hum log ise karenge. We are just quickly going to conceal the brows with a shade which is maybe the equivalent one or one shade lighter. I am going to go with one shade lighter than your own color. And I'm using an angular brush for that. Shashi, can we just zoom a little bit? Yeah, sure. Yeah. Okay. Perfect. So, अभी आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे मॉडल के जो ब्राउज हैं वहाँ पे थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रा हेयर आपको दिख रहे हैं। तो इफ इन केस किसी के ऐसे ब्राउज हैं जहाँ पे आपको थोड़े एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं एंड आपको बहुत ही स्लीक सा लुक चाहिए, तो आप उस केस में क्या करोगे कि आप एक कंसीलर की हेल्प से अपने ब्राउज को कंसील करेंगे। जो कंसीलर का शेड होगा वो या तो एग्जैक्टली आपके स्किन टोन का होगा और या तो फिर आपके स्किन टोन से एक शेड लाइट होगा। ओके, 2 शेड लाइट नहीं जाना है, ना ही डार्क जाना है, या तो बिल्कुल आपके स्किन टोन का या तो फिर उससे एक शेड लाइट। एंड देन आप उसको कंसील करेंगे सेम वे में जैसे अभी सृष्टि कर रही है। एंड सृष्टि यहाँ पे एंगुलर ब्रश यूज कर रही है। Yes. And the product which I'm using is FS27 by Krylon. Okay. So here we can see that we are making it look more thinner as compared to the actual brow shape. You can skip this step if in case the brows are already pretty thin. Okay? And you can go with a lighter shade, but problem क्या होगा कि अगर आप और lighter shade के साथ जा रहे हो, so that will make your brows look more defined. And we have to make this makeup look very minimal, right? So हम इतना ज़्यादा defined application नहीं करने वाले हैं. Also, it is not going to cause any harm though. Yeah. Yes, Saloni. So yes, if in case आपको अपने ब्राउज को ऑलरेडी मतलब किसी के बहुत ज्यादा बुशी ब्राउज नहीं है ना, आपने उसको ऑलरेडी एकदम मस्त सही से करवा के रखा है, तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। बट इफ इन केस किसी के थोड़े बुशी ब्राउज हैं
तो आप ये स्टेप कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप इससे एक शेड लाइट भी जा सकते हो, बट एक शेड लाइट जाने में क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा स्लीक लुक दिख जाएगा। एंड क्योंकि हम ये मेकअप को अपना बहुत मिनिमल एंड बहुत नेचुरल रख रहे हैं, सो ऑब्वियसली किसी के ब्राउज, नेचुरल ब्राउज बहुत ज़्यादा एकदम ही सेट नहीं होते ना, आपको बहुत नेचुरल सा लुक देना है, इसलिए हम सिर्फ एक शेड जा रहे हैं। बट इफ इन केस आपको बहुत स्लीक रखना है तो आप 2 शेड जा सकते हो, बट उससे ज़्यादा मत जाइएगा। ओके? Okay. Till then, do we have any queries, Saloni? Yes. So we do have few queries. So somebody is saying that, ma'am, I have oily skin and I use water-based moisturizer only, but still I get my face very oily. So what should I do then? Okay, what I would suggest you is dab in some oil-based moisturizer, and before by the time you're doing the cleansing, make sure you're using a more heavier soapy cleanser, because I think you're not evening out the oils which are already present on your skin. And then later you can use a more lighter application or minimize the amount of hydration you're applying onto your skin. So maybe just a fingertip, or maybe बहुत कम, a very sheer layer of moisturizer only to the areas which are extremely dry, and then pull up the moisturizer to the other areas. Yes. Until then, I'm going to blend in the concealer with the skin. So मैं फटाफट से I'm using this beautiful large brush by Real Technique, and I'll just blend off the concealer into the skin. Until then, yes, Saloni, do we have any other queries? And also, Yes, are everybody enjoying the session? सबको समझ में आ रहा है what we are explaining? If yes, so drop in a yes. Yes, guys, if you all are able to understand that what we are teaching, सबको समझ में आ रहा है कि हम क्या समझा रहे हैं, तो प्लीज एक हमें yes या thumbs up जरूर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है. Okay, so somebody was asking what is the concealer name. So the concealer that Shrishti is using is by Krylon, and it is the Supra palette. Shade number is FS5. Okay? Okay. It's FS27, yes. Oh, sorry, FS27. Yeah. Shade number is FS27. Okay. So सृष्टि, एक और क्वेश्चन था. Somebody was asking that मैम मेरा टी जोन का जो मेकअप होता है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, जबकि बाकी फेस का सही से रहता है. So where I am wrong in this? Okay, so maybe you're overly hydrating the area around your T-zone, and maybe you're not applying the apt amount of TL to that T-zone, or maybe the apt amount of compact. So हो सकता है कि आप वहां पे नहीं तो बहुत overly hydrate कर रहे हो अपने T-zone को, being that area to be very oily, या फिर आप सही अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्ट और टीएल में से कुछ नहीं लगाते हो. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम अपना टीएल को बेक करेंगे स्पेसिफिकली जहाँ पे आपका बहुत ज्यादा मूव करता है. हम बहुत सारा टीएल लेंगे, बहुत सारा डिपॉजिट कर देंगे या फिर कॉम्पैक्ट डिपॉजिट कर देंगे, सब कुछ ब्लेंड करने के बाद, एंड दैट विल अब्सॉर्ब आउट ऑल द ऑयल्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट. And still if you're sweating or if you're getting a lot of oiliness into that specific area, try to use a different formula of moisturizer into your T-zone, and then baki areas mein you'll use the same moisturizer which you're using right now. Chaliye. So for today's makeup, I'm just going to use one single palette for the whole look, and the palette which I'm using is Revolution Pro palette by London. So हम ज़्यादा products नहीं use करने वाले हैं. We are just going to use one brush, hardly two, just to blend out a couple of more colors. Yes, so we are going to get started with the neutral color from this palette. तो आप ये न्यूट्रल देख रहे हैं, हम इससे स्टार्ट करेंगे to use it as a transition shade. गलती क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स कि क्लोज आईज या फिर इन जनरल जो भी कोई अपने लिए मेकअप कर रहे हैं, करते क्या है, they quickly apply the color which they have to apply onto their eyes. ब्लू आई मेकअप करना है तो ब्लू ही लगा लिया. प्रॉब्लम क्या होता है कि whenever you have applied just the blue and no transition shade under, so there is just your skin color and straight away blue. So that looks very unnatural, right? So what you have to do first and priorly is that apply a transition shade into your crease and then apply the color which you want to. Okay? So we are going to pick this brush, use any neutral color. You can use a brown also, you can use the orange also, you can use a neutral skin color also. Just use a undertone color. Okay? Use a color underneath the color which you're going to apply. Yes, Saloni, can you explain it to everybody? Yes, sure. So अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे.
तो जब हम आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो होगा हमारा ट्रांजिशनल शेड। तो जो सबसे बेसिक मिस्टेक होती है लोग करते हैं वो ये होता है कि जो भी उनको आई मेकअप करना होता है वो डायरेक्टली उसी कलर से स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लू आई मेकअप करने जा रहे हो तो लोग डायरेक्टली ब्लू अप्लाई कर लेते हैं अपने आईज पे। तो उससे क्या होगा, आपको उतना अच्छा पे ऑफ नहीं मिलेगा एंड प्लस इतना अच्छा आपका आई मेकअप आएगा नहीं। सो बेसिकली आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो करना होगा एक ट्रांजिशनल शेड से। सो ट्रांजिशनल शेड क्या हो सकता है, या तो आपका ब्राउन होगा या ऑरेंज होगा या फिर आपका स्किन कलर, मतलब कोई भी ट्रांजिशनल शेड आप जो होगा वो सबसे पहले यूज करोगे ताकि आपको ब्लेंड करने में इजी हो एंड आपको पे ऑफ ज्यादा अच्छा मिले अपने आई पे जो भी आप मेकअप कर रहे होगे उसका। चलिए, यस सृष्टि। so I am going to teach you a very simple easy trick to how to find your crease. ठीक है, तो मैंने अपने medium eyeshadow brush में, and this is a very basic medium eyeshadow brush, this is by Vega. So I am going to pick this brush, I'm going to put it around her lash line and ask her to open her eye. I open किया, now I'm going to move around this brush. Close your eye, open your eye. I'm going to move this brush around where the brush fell, मतलब जहां पर आपका brush fall किया. I'm just moving around my brush in that specific area. ठीक है, close your eye. This is the crease area. ठीक है, beat any person. What you have to do is put your brush on your lash line, open the lid, and then move this around in a wiper motion. ठीक है, तो हमने wiper motion में apply कर दिया. आपका आ गया. Same way around on the other side also. We are going to do the same. Open your eye. सो नेक्स्ट अभी आप देख रहे हैं हम अपना ट्रांजिशनल शेड अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ट्रांजिशनल शेड होता है वो जनरली क्रीज एरिया में अप्लाई किया जाता है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ वो ये होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि बेसिकली क्रीज एरिया कहाँ पे है या उसको फाइंड कैसे किया जाए। तो इसकी सबसे इजी ट्रिक ये होगी कि आप अपना ब्रश लीजिए, उसमें अपना जो भी आपका ट्रांजिशनल कलर होगा वो लीजिए, उसको अपने आईज के ऊपर रखिए यानी कि आईलैंड में जहाँ पे सृष्टि कैन यू प्लीज डू इट विद मी बिकॉज काफी सारे Yeah, लोग sure. थोड़ा सा कंफ्यूज। तो आप हाँ जी. ऐसे अपना ब्रश रखेंगे एंड अपने जो भी इंसानों को उसको आप बोलोगे कि Right. अपनी आईज ओपन करिए। जैसे ही वो आईज ओपन करेंगे जहां पे भी ब्रश टच होगा वहीं पे आपको बस अपने ब्रश को थोड़ा से ऐसे करके मूव करना है। तो आप वो जैसे ही मूव करोगे वो कलर होगा जो आपके ब्रश में वो वहीं पे प्लेस हो जाएगा। फिर आप सामने वाले बंदे से बोलोगे कि आप अपनी आईज बंद कर लो। तो जब वो Close your अपनी eyes. आईज बंद करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हो कलर लगा हुआ है वो जो एरिया है वो एरिया होगा आपका क्रीज एरिया। तो आप किसी भी पर्सन पे काम कर रहे होगे तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है उनका क्रीज एरिया फाइंड करने का। ओके, चलिए. So now we are going to blend off this color because आप देख सकते हो कि यहाँ पर you can see harsh line. We are going to blend it off with the same brush. I'll remove all the product which is present in the brush, either on a tissue paper. Close your eyes. I'll blend off this color. And what I'm going to do is in the same wiper motion. ठीक है? So what I'm doing is I am blending it off into the same wiper motion. मैं थोड़ा सा crease के ऊपर लेके blend कर दूंगी इस color को. सो तो नेक्स्ट harsh आप lines देख नहीं दिखें. हाँ जी. सो एक बार अपने अपने कलर को प्लेस कर दिया तो जब आप प्लेस कर दोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि वहां पे आपको हार्श लाइंस दिखेंगे। एंड ऑब्वियसली किसी को भी मेकअप में हार्श लाइंस नहीं चाहिए होते, हमें एक ब्लेंडेड मेकअप चाहिए नेचुरल लुक के लिए। तो आप उसके लिए क्या करोगे कि आप अपना ब्रश लोगे, इजिली उसको जहाँ पे आपका कलर प्लेस हुआ है वहां पे वाइपर मोशन में जैसे आपने अप्लाई किया था बिल्कुल वैसे ही वाइपर मोशन में आप उसको वापस से अप्लाई करके ब्लेंड कर दोगे। ओके, वाइपर मोशन में आपको ब्लेंड करते जाना है ताकि जो भी हार्श लाइंस हो वो रिमूव हो जाए एंड हमें एक ब्लेंडेड लुक मिले यहाँ पे। Okay. So now we are blending off the color. You can see. Can you close your eyes? You can see the difference, and also this area where I've applied the color, I'm just going to pull it downwards. So crease में तो blend कर दिया, but मैं इस color को lid पे भी थोड़ा blend करूँगी. So I'm just pulling it downwards. Just make sure you're not applying it too upwards. तो हमेशा ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, brow तक color चला जाता है. It looks very horrifying. So you have to make sure the color should be restricted to this line right above the crease. Should be blended by then. ठीक है? Now when I've blended off the color nicely, I am going to use the same brush and use a different color now. So let's pick the pink. As we are not going to go with a lot of brushes today, let's go with the pink.
And I'm going to apply it just in the outer corners. So close your eyes. So I am going to follow this very easy technique. What I'm going to do is first I'll reduce the amount of product which is in my brush. What I'm going to do here is I am going to go downwards and upwards in the same crease area. क्या किया मैंने एक 7 बना दिया. I went downwards and upwards. ठीक है? Same way around on this side. बहुत difficult कुछ भी नहीं है. And also, are we getting any yeses? Everybody getting what we are teaching here? सबको समझ में आ रहा है? I think everybody is understanding what we are trying to teach them. Okay. So अभी हमने क्या किया? अभी हम लोग अपने काम कर रहे हैं आउटर वी एरिया में. आउटर वी एरिया में काम कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या किया? हम लोगों ने एक पिंक शेड लिया, सेम ब्रश है जो जिसमें हम लोगों ने ट्रांजिशन शेड लिया था, वही सेम ब्रश है, उसमें हम लोगों ने पिंक शेड लिया एंड जो अपना आउटर वी है वहां पे हम लोगों ने एक बार ऐसे एक नीचे की तरफ लाइन बनाई और एक ऊपर क्रीज एरिया की तरफ लाइन बनाई एंड आपका कलर आपका जो क्रीज लाइन है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए. अगर वो उसके ऊपर गया तो आपका आई मेकअप काफी खराब लगेगा. ओके, सो डोंट गो अबव दैट. Yes, Srishti. So now let's blend off this outer V because यहाँ पे भी आपको एक harsh line दिख रहा है. चलिए इसे blend करते हैं. So now I have removed all the product which was there in the brush, just a tiny bit amount. अब मुझे same motion में with a clean brush I have to move around. ठीक है? So in the same motion I'll go downward, but this time I'm going to hold my brush from a bit far away for a more blended effect, and I have to make sure that my brush is clean also. I have to go inward, same way. And downward, inward and downward. Blending is the key. Unless your makeup is not nicely blended, if the colors are visible, काफी harsh onto your eyes, then it is not going to look very beautiful. So, अभी हम क्या? The more you're going to blend, the more you're going to learn how to work with different colors. ठीक है? So practice around with different colors. You're not going to learn it all at once, just in one day. आपने time देना है. Same around I'm doing on the other side. Yes, Saloni, can you explain it so that I can re-explain it on the other side in Hindi? Yeah. Sure. तो अभी हमने क्या किया? हम लोगों ने एक क्लीन ब्रश लिया एंड उसके हेल्प से जो हम लोगों ने अपना कलर अप्लाई किया था उसको हम लोगों ने अच्छे से ब्लेंड इन कर दिया है. ओके, आप इसे ऊपर की तरफ एंड आप सेम वे में जैसे आपने अप्लाई किया था सेम उसी मोशन में आप उसको अच्छे से ब्लेंड करोगे. जब तक आपका कलर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तब तक आपको एक ब्यूटीफुल शेड ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. जस्ट रिमेंबर दैट द ब्लेंडिंग इज द की. ब्लेंड अच्छे से नहीं करोगे मेकअप अच्छा नहीं लगेगा. यस सृष्टि. चलो नाउ आई एम ब्लेंडिंग इट. मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ, नीचे की तरफ कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से कर रही हूँ. ठीक है? इट माइट लुक, एंड यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो आपका कलर पूरा बाहर की तरफ जाएगा. यू हैव टू गो इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, एज इजी एज दैट. ठीक है? Now when we have applied the color, let's apply some liner onto her eyes. So yes, till then, do we have any queries, Saloni? Yes, we do. So somebody was asking that, ma'am, after the crease area, do we have to start with the outer corner or with the inner corner? Why aren't we starting with the inner corner? Okay, you can, okay, so if in case you're wanting to do a complete lid full of the color, you can start with the inner corners also. But the more harder, and also whenever you want the eyes to look bigger, we apply the colors in the outer corners and we keep it very light in the inner corners, okay? To make it look in the almond shape. So this is the most generic eye makeup. You can also apply it in the inner corners also, and you can blend it around in the whole lid, okay? Now let's pick some gel liner. I am using the L'Oreal gel in shade 01 Profound Black. And I'm using a liner brush by Real Technique. क्या करना है? फटाफट से, you just have to dip into the brow pomade. Then I've dipped it in. बहुत easy, simple technique. Close your eyes. What I'm going to do is I am going to create some boxes here. So I'm teaching the easiest way of applying the liner, not too difficult. I am doing some boxes. Can you see those boxes? Same way around, I'm going to do it on the other side. You have to be really quick with your gel liner. Make sure आप उसे बंद भी कर दो, the lid. So yes, Saloni, do we have any queries till then? Yes, we do have a query. So someone is asking that, ma'am, I sweat on my face very quickly when I apply anything on my hair.
anything on my face. Can you please help me with that? Okay, so sweating can be because of the glands. So to reduce the amount of sweat which you're seeing generally onto your skin, you can apply a thin layer of milk of magnesia. That helps a lot. Or you can apply a lot of CL onto that specific area. That would help too. Or you can apply some rice powder. So not the rice ghar wala powder. You have to buy the rice based powder or the rice based CL. That is going to help you a lot with the oil and the sweat. Or you can use some blotting paper also. So now these boxes which we have created here, we are going to fill it in. तो ये जो बॉक्स हमने बनाया है उसको अब इजी है, हमें पता है कितना थिक जाना है. वी जस्ट हैव टू फिल देम इन. ठीक है. तो अभी हमने क्या किया है, हम लोगों ने बस जितना थिक हमें लाइनर लगाना है हमने उसी के अराउंड बस ऐसे छोटे छोटे से ऐसे थोड़े थोड़े दूर पे से बॉक्सेस बना दिए. बॉक्सेस यानी कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की लाइंस बनती थी ना, वैसे ही आपने लाइंस बना देनी ताकि आपको एक गाइड मिल सके कि आपको कैसे अप्लाई करना है अपना लाइनर को. तो ऐसे ही आप एक थोड़ा सा लाइन क्रिएट करिए एंड देन what you have to do is fill it in together. So it gets very easy to the areas where you're supposed to fill in. And now we are going to fill into the other side also. So your liner won't ever get very thick and thin on one side and on the other. तो आपने boxes बहुत आराम से बना लेना है. Okay. Sakshi, if your gel liner has got dried up, you can use that Inglot ka. There's a product called as Duraline. I'll just quickly show you the product. Yes, you can use a couple of drops of Inglot Duraline. This is the product. I'll show you. You can take a screenshot of it. So this is the product, Inglot by Duraline. And you can check it in the recordings also, available on the Pankhuri app also. So yeah, definitely a go-to product. You can just add a couple of drops into the dried up product and you can use it right away. Chaliye, so let's talk about the wing now. Open your eyes. We are going to create a beautiful wing liner. Very simple, not too difficult. So karna kya hai? The reason why we did the brows first, we are going to look for the last point of our brows and we are going to create a very thin imaginary line following that line. Okay? And also niche ka water line we are going to follow. Same way around on this corner. Last hair, imaginary line follows. Okay? Now I have to check if both the lines are equivalent. Okay. Now I'll fill it in. So अभी हम लोगों ने क्रिएट किया अपना लाइनर. लाइनर क्रिएट करने का सबसे इजी एंड सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो आपका ब्राउज होगा, ब्राउज का जो सबसे लास्ट वाला हेयर होगा वो, एंड जो आपका आईज का एंड है यानी कि आउटर वी वाला यानी कि जो आपकी लोअर वाटर लाइन है वहां तक एक लाइन इमेजिन करिए एंड देन उसके बाद आप एक छोटी सी लाइन, मतलब जितना भी आपको बड़ा आपका लाइनर चाहिए उतना बड़ा एक लाइन क्रिएट कर दीजिए दोनों साइड. तो ऐसे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर गाइड मिल जाएगा एंड आप इजीली अपनी लाइन क्रिएट कर सकेंगे. जब आपने लाइन क्रिएट कर दी उसके बाद उसको फिल इन कर दीजिए एंड आपको प्रॉपर एक वो मिल जाएगा. So you can see the complete eye makeup done hardly with 2 brushes. We used the liner brush and we did the complete eye makeup with just 1 brush. And yeah, do we have any queries till then? Yes. So we do have few queries. Okay. Mamta ma'am, I will request you to please repeat your question once. मेरे को आपका question शायद मिस हो गया होगा. आप प्लीज एक बार अपना question पूछ लीजिए तो मैं पूछ लूंगी. Okay. So Swati, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि that how you are going to find the crease. So I will request you to please watch the recording once and you will know the technique to find your crease. Okay. Okay. So now I'm going to neutralize the face up rather than using a color corrector because we can see a lot of discoloration is not there. See, there is a lot of discoloration around the mouth, but we are going to do extremely minimal looking look. So हम थोड़ा सा naturally दिखाएंगे. We are going to use a neutral tone. So the tone which we are going to use is 1 shade darker than our own color, and that is FS26 from Krylon. So I'm just going to apply it in the area where she has a couple of dark circles. तो अभी आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी हमें अपने फेस पे डिस्कलरेशन या फिर पिगमेंटेशन दिखेगा हम उस एरिया को कलर करेक्ट करेंगे. तो अभी अगर आपको कहीं पे भी आपके फेस पे दिख रहा है कि
डार्क सर्कल्स हैं, अगर हैवी डार्क सर्कल्स हैं तो आपको कलर करेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर। यानी अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो ऑरेंज कलर करेक्टर आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन या बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप उस केस में कंसीलर की हेल्प से भी अपने फेस को कलर करेक्ट कर सकते हो या फिर कंसील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जो हमारी मॉडल है उनके फेस पे बहुत हेवी डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन नहीं है, तो हम लोगों ने नॉर्मल अपनी कंसीलर की हेल्प से उसको कंसील कर दिया है। तो जो हम लोगों ने शेड लिया था वो उनके शेड से एक शेड डार्क था। ओके, वी हैव टेकन अ शेड डार्कर दैन हर ओन स्किन टोन टू कंसील द एरियाज वेयर वी कैन सी पिगमेंटेशन। जहाँ पे भी हमें पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने एक शेड डार्कर कंसीलर यूज करके उसको कंसील कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है। बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन होगा तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करोगे। Also, Yes, it is Srishti. not about the pigmentation or the darkness. It is also about कि आपने कितना coverage चाहिए. We want a more natural looking skin. We are not going to use a color corrector here. We are going to use a neutralizer. You can skip that also. So let's quickly go with the foundation. So I am going to use a Supra concealer for the foundation here. And as for concealer, I will teach you how to use different shades and pick your own color. So here I'm applying FS27 onto her cheek area. ठीक है, मैं और कलर्स अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ. So what you have to do is you have to always apply the color onto the jaw area before applying it as onto the whole face, not onto your wrist, not onto the other areas. You have to apply it on to the jaw area. ठीक है, because that is the closest to your face and also the closest to your neck. तो आपने यहाँ वहाँ नहीं लगाना है, आपने सिर्फ अपने jaw area पे लगाना है to pick the right foundation. Okay, so can quickly just everybody tell me अगर ये number 1, number 2 and number 3 है तो कौन सा foundation हम pick करेंगे which is exactly the same color as hers? जल्दी बताइए, because I can to see, but yeah, maybe it would help if we keep this class very interactive. जल्दी से पहले मैं एक बार तो ये colors को blend off करके दिखाती हूँ आपको. So till Srishti is blending it off and you all are answering, तब तक मैं एक बार जल्दी से इसको हिंदी में रिपीट कर देती हूँ. तो अगर आपको आपका फेस का फाउंडेशन या कंसीलर चूज करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका, यानी कि फाउंडेशन चूज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने जॉ लाइन एरिया पे अपना फाउंडेशन अप्लाई करो एंड उसको ब्लेंड करिए. जो भी कलर आपकी स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है इसका मतलब है वो आपका फाउंडेशन शेड है. इफ इन केस एक से नहीं हो रहा है तो एक दो फाउंडेशन को मिक्स करिए एंड आप अपना कलर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. चलिए, so now have everybody answered? कौन सा color है? 1, 2 or 3? It was 2. A lot of people have answered 2. Maximum have answered 2. Yes, because 1 was extremely light for her and 3 was extremely dark for her. So yes, 2 was exactly the face shade. And picking the same concealer by Supra, I've added some drop of Duraline into it to make it more liquefied. And I'll just add a couple of dot applications. You can do it with the fingers also. I would prefer using the brush. आप कुछ भी अगर आप हाथ से करना चाहते हैं फिंगर्स से लगा सकते हैं. I'm just doing a dot application. Okay, so Srishti, there was a question. Yes. So someone is saying that, ma'am, I have problem blending my color corrector in the inner eye area. Every time I do it, it looks very cakey. What should I do for it? Okay. So maybe you're using a very thick-based color corrector. What you can do is use a liquid-based one. That would help you a lot, and also make sure you're applying a good amount of under-eye cream also, so that it's well hydrated and it gets very easily blended. And also it can be because of the tool which you're using. Can you just text up in the comment box which tool are you using to mix and to blend on the color corrector? Till then, I have applied some dot application. Can you look into the camera? मैंने कुछ dots लगाए हैं foundation के onto her face. And now I'll use a damp beauty blender. So मेरा beauty blender इतना wet है कि वो drip नहीं कर रहा. It is not going to drip water, but it is at the same time moisty. So make sure your beauty blender is always damp. It is a very important step because नहीं तो आप product blend करते रहोगे, आपका product कभी blend नहीं होगा. It will get cakey. So you always have to use a damp beauty blender, not a dry one, not an overly wet one, just a damp one. ठीक है? Not a dry one. Also ये भी question आता है
is because dry one will eat up the product, and the overly wet one will just change the balance of the product. It will make the product too fluid and will start dripping onto the face, which is not very pleasing for the client. Right? Chaliye. Yes, Saloni, can you explain it in Hindi? श्योर. सो अभी हमने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया. फाउंडेशन को ब्लेंड इन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एक ब्यूटी ब्लेंडर. जो ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज कर रहे हैं वो ना ही बहुत ज्यादा ड्राई है ना ही बहुत ज्यादा वेट है, यानी कि उसे हम कहते हैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. डैम्प का मतलब होता है कि आप उसको पानी में डालो, पूरा पानी वो सोख ले, उसके बाद पूरा निचोड़ दो, उसमें से बिल्कुल ऐसे कुछ पानी वानी गिरना नहीं चाहिए, बस वो गीला है. एंड देन उसकी हेल्प से आप अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से वो कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो. ओके सृष्टि, देयर वर फ्यू क्वेश्चंस. Yes, before that we are just quickly going to highlight her face. तो ये बात आ जाता है कि मैम फाउंडेशन कैसे यूज करें. फाउंडेशन never makes us look more glowy or lighty. We have to make sure that we are using one shade lighter of a concealer to make the face look more highlighted, right? To add more contrast. So contouring हम इसलिए करते हैं, highlighting हम इसलिए करते हैं. So I'm just going to add up a bit of highlighter, a shade which is one shade lighter than her own, just on the high points of her face. Yes, till then, Saloni, can you follow up the question? श्योर, जस्ट लेट मी रिपीट इट. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने फेस को हाईलाइट कर रहे हैं. ओके, क्रीम हाईलाइटिंग कर रहे हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी शेड जो आपके स्किन टोन से एक शेड जो है लाइट होगा, आप वो कलर यूज करोगे. एंड अपने जो हाई पॉइंट्स होते हैं आपके फेस पे, यानी कि जहाँ पे नेचुरली लाइट हिट करती है, उन एरियाज में आप अपना वो शेड अप्लाई करोगे एंड देन उसको हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे. ओके, सो सृष्टि, देयर वाज अ क्वेश्चन. Yes. कि मैम व्हेन वी आर वर्किंग ऑन एक सीन. ओके, क्रीज लिमिट टू पुट द आई शैडो इन ड्रूपी आईज. Okay, so whenever you have the droopy eyes, make sure that you're applying the color or blending the color right a bit above the hood so that it is always visible. And also whenever you're selecting the crease, see the reason why I did it when the eyes were open. So even if the eyes are very droopy, the application of color will always be visible once the eyes are open. And our main motto and main goal is that जब भी client eye open करके सामने देखे, even the hood color should be visible. As you can see, her eyes are slightly hooded, and you can see the color nicely visible to you guys, right? Because all the applications which we have done were during her eyes were open. Okay, so you have to always make sure कि आप eyes open करवा के crease search करो. Yes. Till then, also, do we have any other query? Yes. Okay, Aisha, for your question, I think this is more of a dermat question. So I will request you to please either you can go for the dermat sessions that we organize. आप उनके लिए जा सकते हैं, or you can visit a dermat because this is something your dermat can help you with. Okay. Okay. So now I'll just blend off everything together. And see, ये बहुत बड़ा मतलब confusion होता है कि मैम beauty blender को कैसे hold करना है. So what you have to do is take your finger, hold it, press it from there whenever you are doing more precise application, and put your pressure onto that specific area and not onto the whole face. So होता क्या है? Generally what people do is take the whole beauty blender and start dapping it off onto the face. For doing a more for covering more area, using that process would be a good idea. But when we are doing more precise application, you have to make sure that the application of the space and the product which we are blending should be in that precise area, right? Be it your color corrector, be it your highlighter. So make sure कि आप उसे properly उसी area में blend कर रहे हो with the help of your finger. Yes. Saloni, can you explain it in Hindi? Yeah, sure. So जब भी आप कोई बहुत प्रिसाइज काम करोगे, यानी कि जैसे कि आप इनर आइज पे काम कर रहे हो या फिर आप अपने नोज को कॉन्टूर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे कि आपका जो काम है, यानी कि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है, आप उसको थोड़ा सा ऐसे छोटू सा कर लोगे. छोटू सा करने का मतलब कि आप उसको ऐसे कस के पकड़ के छोटा सा एरिया क्रिएट कर लोगे एंड देन उसी एरिया की हेल्प से आप पूरे अपने फेस को ब्लेंड करोगे, या कि मतलब कि उस एरिया को आप ब्लेंड करोगे ताकि उस एक पर्टिकुलर एरिया में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिसाइसली काम कर सको एंड अच्छे तरीके से अपने आई को कलर्स को ब्लेंड इन कर सको. Okay. Yes, so yes. So now when we have applied everything and we are done with the cream application, we are quickly going to pack on everything so that अब हमारा makeup move ना करे
So now I'm going to use a TL. You can use a compact also, and the TL shade which I'm using is TL2 by Krylon. आप कोई भी लूज पाउडर कह लो, इसे TL कह लो, बनाना पाउडर कह लो. बनाना पाउडर इज मोर टू द ऑरेंज साइड, तो वो थोड़ा चांसेस कम कर देता है मेकअप को एक्चुअली करने का, बिकॉज द ऑरेंज इन द बनाना पाउडर इज गोइंग टू करेक्ट द डार्कनेस ऑफ योर फेस. मैं अभी थोड़ा सा TL यूज करूंगी, एंड आई स्पेसिफिकली यूज इट वेयर आई अप्लाई सम एक्स्ट्रा कंसीलर. सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ने अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लिए, तो अब हम उस पूरे के पूरे फेस को लॉक करेंगे ताकि हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट है वो मूव ना करे एंड प्रॉपरली वैसे ही रहे. सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना टीएल यानी कि लूज पाउडर जो होता है आप वो यूज करेंगे अपने फेस को लॉक करने के लिए, एंड स्पेसिफिकली वो एरिया जहाँ पे अपने अच्छे से कंसीलर वगैरह अप्लाई किया है. ओके चलिए, so I'll use a powder brush and I'll buff off all the powders and everything. I'll just blend it off all to the whole skin. If you have extremely oily skin, so try to apply the TL on to the whole face with your beauty blender. पूरा face पे लगाएंगे. She have a more drier skin, and you can see her face now. It is reflecting nice light, looks glowing, but the face shade is exactly to her neck shade because हमने neck पर कोई color नहीं लगाया. I'll just quickly zoom out. You can see that the face looks very natural, but we have color corrected it all. Yes. So सब कुछ blend off करेंगे, and quickly let's start with all the powder applications of the face. Okay, now I am going to use just one powder brush for all the applications. So yeah, so first and foremost we are going to start with the most lightest, because हम एक ही brush use करने वाले हैं, तो हम सबसे लाइटेस्ट प्रोडक्ट से सबसे डार्केस्ट पे जाएंगे. ठीक है, अगर आपके पास अलग अलग ब्रशेस हैं, यू कैन ऑलवेज यूज different brushes for the different applications. ठीक है, so for the starters, to create a more contoured effect, what I'm for starters, for creating more highlighted effect, what I'm going to do is I'll open this complete brush to bring more flatter effect, and I'll pick a highlighter. So the highlighter which I'm using right now is from Anastasia Beverly Hills, and I'll pick this product. I'll flatten the brush and I'll apply it on the high points of her face. You can skip this step if you don't like a lot of highlighting. So अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंस हम लोग एक ही ब्रश से अपना कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे, तो इसलिए हम सबसे पहले सबसे लाइट शेड यूज करेंगे एंड देन डार्क शेड्स पे जाएंगे. इफ इन केस आप अलग अलग ब्रश यूज कर रहे हो तो आप अपना पैटर्न चेंज कर सकते हो. ओके, सो आप सबसे पहले क्या करोगे, हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है. हाईलाइट करने के लिए हम लोगों ने अपना पूरा ब्रश जो है उसको ऐसे करके प्रेस किया एंड एक फैन ब्रश जैसा शेप क्रिएट किया. उसके बाद हाईलाइटर लिया. सृष्टि और ऑन म्यूट. ओके, सो ये ब्रश हम लोगों ने ऐसे ओपन किया एंड आप देख सकते हो बीच में सृष्टि ने उसको प्रेस करके ऐसे फैन जैसा शेप क्रिएट कर लिया. एंड उसके बाद हम लोगों ने जो भी हमारे फेस के हाई पॉइंट्स है वहां पे हम अप्लाई करेंगे, एंड ताकि जहाँ पे भी नेचुरली लाइट आती है, फॉर एग्जांपल जो आपका ब्राउ बोन हो गया, या फिर आपका जो चीक बोन एरिया हो गया, या फिर आपका जो नोज का ब्रिज हो गया, वहां पे अप्लाई करेंगे ताकि हमें प्रॉपर एक हाईलाइटिंग इफेक्ट मिल सके. Okay, so now I'm going to pick a blush, and the one which I'm using is the shade Orgasm by NARS. आप कोई भी blush ले सकते हो. I am going to quickly pick the same blush with the whole powder brush, and what I'm going to do is for a more centric application, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी, and I'll apply it right below the highlighter. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब हम अप्लाई कर रहे हैं अपना ब्लश. सो ब्लश के लिए आप क्या करोगे कि अपने ब्रश को हल्का सा आगे से पकड़ोगे ताकि वो थोड़ा सा छोटू सा हो जाए, ताकि हमें एक प्रिसाइज सा वर्क मिले. एंड हम लोग उसको जहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइटर अप्लाई किया था उसके जस्ट नीचे हम अप्लाई करेंगे अपना ब्लश. ओके, सो सृष्टि, देयर वर फ्यू क्वेश्चन. Yes. सो देयर वाज अ क्वेश्चन कि मैम क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हो अपने ब्राउज को थोड़ा सा ग्रो करने के लिए, एंड क्या कोई तरीका है जिससे वो जो वाइट हेयर्स हैं उनको मैं उनको हमेशा के लिए ब्लैक कर सकूं.
व्हाइट हेयर के लिए, आई मीन जो आपके ग्रे हेयर है उनके लिए तो देयर इज नो ऑप्शन, बट जो आपके ब्राउज है, यू कैन ऑलवेज डेफिनेटली अप्लाई सम castor oil onto it. Just make sure you're diluting it up with some other carrier oil. You can always brush your brows up with that, or maybe a bit of jojoba oil. That will help with the growth. ठीक है. A lot of people say that कोल से भी, कोल as in the pencil, उससे भी हेयर ग्रोथ होता है, बट आई वुड रेकमेंड rather using oils at night and make sure if your skin tend to break out a lot, use a very little consistency of that. तो मैं थोड़ा सा ब्लश को इंक्रीज करूंगी. आई एम गोइंग टू यूज दिस कलर. आई एम गोइंग टू मिक्स दीज टू शेड्स, पिंक एंड कोरल, फ्रॉम द सेम ब्रश. तो ब्रश की तंगी एक ही ब्रश से वी आर गोइंग टू डू द कंप्लीट लुक. ओके, तो अभी हम सेम ब्रश से हम लोग पूरा का पूरा जो अपना ब्लश है उसको अप्लाई करेंगे. तो हम लोगों ने ब्लश के लिए 2 कलर्स को मिक्स किया है, एक कोरल एंड एक वो आप हल्का सा लाइट पिंक सा शेड देख रहे हो. उसको हम लोगों ने 2 को मिक्स किया अच्छे से एंड हम उससे एक कलर क्रिएट करके एज अ ब्लश यूज कर रहे हैं उसको. Okay, and now I'm going to contour or bronze her face a bit. So just to add more definition, what I'm going to do is I'll pick this contour shade, and what I'll be doing is I will angle my brush a bit. ठीक है, so मैंने यहाँ पे side से I've put my finger. This is going to create a better angle. And what I'm going to do is just right below the blush, from the top of my ear to the last point of my lip, I am going to contour her face, her jawline. She also, I mean, she already have a very chiseled jawline. Same on the other side. तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एक सेम ब्रश हम यूज कर रहे हैं. उसको हम लोग ने एक साइड से हल्का सा प्रेस कर दिया ताकि वो एक एंगल जैसा क्रिएट कर सके एंड देन उस ब्रश से हम लोग पूरा अपना जो फेस है उसको कॉन्टोर कर रहे हैं. तो कॉन्टोरिंग के लिए जो सबसे इजी ट्रिक होगी आपके चीक्स को कॉन्टोर करने के लिए वो ये होगी कि आपका जो ईयर है, ईयर के टॉप से आपके लिप्स के जो एंड होता है वहां तक एक लाइन इमेजिन करिए एंड देन उसी लाइन को एज अ गाइड यूज करके आप एक ऐसे, जैसे भी आप देख सकते हैं सृष्टि को, ऐसे ही आपको एक लाइन इमेजिन करनी है एंड देन इसी पे आपको कॉन्टोर करना है. उसके बाद जो आपका जॉ लाइन होगा उसको कॉन्टोर करेंगे आप एंड अगर आपका फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है तो आप फोरहेड को भी कॉन्टोर कर सकते हैं. चलिए. So now I'll just quickly do her lips, and that for that color we are going to go for a very nude shade, nude and coral. So for that I'm going with the shade Revlon, and the color which I'm going for is 040 with soft rose. It's a very nudie pinky color, and I'm going to use a lip brush, and with a single lip brush without a pencil we are first going to line up the lips. And for that what we are going to do is we are going to go from the center first. I'm going to line the high points of the lips first. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लिप्स है हम उसको सबसे पहले आउटलाइन करेंगे. तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो हम शेड यूज कर रहे हैं वो है रेवलॉन का 040 सॉफ्ट रोज एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग उसको आउटलाइन कर रहे हैं अपने लिप्स को एंड देन उसके बाद हम फिल इन करेंगे इसको. Now you can see that I have nicely outlined the color. अब मैं अंदर फिल करने वाली हूँ. तो अच्छे से आउटलाइन कर लिया तो पता है कहाँ कहाँ प्रोडक्ट लगने हैं, और थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा ओवरलाइन किया है सो दैट लिप्स थोड़े से और प्लम्पी लगे. एंड ऑल्सो पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ी. कैन यू डू द आर फॉर मी? नॉट थोड़ा सा नॉर्मल यू कैन कीप. या तो अभी हम जब हमने अपना आउटलाइन कर दिया अपना पूरे लिप्स को, उसके बाद हम इसमें फिल इन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को. ओके, सो सृष्टि, देयर वर फ्यू मोर क्वेश्चंस. यस, कि देयर इज अ क्वेश्चन कि मैम जो लास्ट लाइंस होती हैं उनको कैसे हाइड कर सकते हैं. उसके ऊपर पहले बहुत सारा टीयर लगाइए. राइट आफ्टर यू हैव ब्लेंडेड द लास्ट लाइन, द स्पेसिफिक एरिया, apply a lot of tear to set it off, and make sure you're not applying a lot of product. Don't apply a lot of concealers into the lash lines. Just apply a smoother base and don't make it overly cakey. Okay? And also for the lower lash line, we'll go back to the same eyeshadow brush. We'll pick the same color and we are going to deposit that color just in the lower lash line because हम नीचे का empty नहीं छोड़ेंगे. And we are good to go.
ओके, यस ममता, सेम कलर से हम आउटलाइन कर रहे हैं एंड सेम कलर से हम लोगों ने फिल इन किया है. ओके, सो देयर इज वन, सो अगर आपके फेस पे लाफ लाइंस हैं तो उसको हाइड करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप हल्का सा अपने लाफ लाइंस को ब्लेंड करिए. ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर आप टीएल अप्लाई करिए एंड देन उस टीएल को हटा दीजिए. Can you तो open इससे your ये hair? आप एक बार अच्छे से वो कर सकते हो. ओके ओके, सो सृष्टि, देयर इज वन मोर क्वेश्चन. Okay. So somebody is asking that whenever I use the color corrector followed by the foundation and try to blend it, it washes out my top foundation and the color of the corrector is visible. What can I do for it? Okay, so the reason to that can be that you haven't blended the color corrector nicely and you're putting a lot of color corrector onto that space. So what you can do is make sure that the first primary application of the concealer of the color corrector is nicely done. And then if you feel that it is leading to more orangeness to your foundation, what you can do next is apply a bit of neutralizer onto it to neutralize the orange which you have already applied, and then apply your foundation. Or what you can do is first apply the color corrector, take your brush, whatever you're using, or your beauty blender, just take a bit of fixing spray onto that specific area, just dab it off, and then let it set for a second, and then apply your foundation. That it won't mix together, and it will lead to a more finished face, right? And I hope everybody is liking the look. I hope you are so liking loving the look. She's I'm so also, loving the Saloni look. is also loving the look. मेरे को She didn't ऐसे have मेकअप the, करना है. see, all the dusties in the house, they like when the colors are nicely picked. Also, she don't have any other option to say. Abhi aise, she has to say कि she's liking the makeup. She don't have any other option. She might give me some extra tips later. But yeah, I hope you are liking the look. And also, Saloni, I hope you are liking the look. And I hope the audience is liking the look. Please drop in the comments if you guys are liking the look. Because, yeah, I mean, we hardly did it with what? 1, 2, 3, and 4 brushes and 5. Yeah, we did this whole look with these 5 brushes, and that's all. And our whole look is nicely blended. The colors are nicely visible. And also, it's not overly done. You can do it for your everyday look. You can wear it around with all your outfits. And yeah. And if you want to carry some more colors, you can always do it around for learning more depth of these colors. You can attend the professional classes with us. Here, I'll just quickly apply a bit of mascara also. And yes, till then, Saloni, do we have any queries? Yes. Yeah. So can you please let us know about the setting spray, that which setting spray is best for it? You can use Derma Color here. That would do. Okay. तो डर्मा कलर आप यूज कर सकते हो सेटिंग स्प्रे के लिए. एंड आई एम तो लविंग द लुक. मेरे को यही मेकअप She's like, सीख I'm के so एकदम loving it. अब तो जहाँ जाना है यही करके जाना है. आई एम डन. यही करके जाना. So now I'll tell you how to do your lashes in a bigger manner, how to make them bigger. Close your eyes. Okay. So what I'm going to do first is I'm using Color Bar mascara, which is my model's personal mascara here. So no brand promotion. So yeah. So I'm quickly, what I'm going to do is applying the mascara here. Quick application. So आप कोई भी mascara use कर सकते हो. I would recommend the Maybelline one if in case you're using it for yourself. तो अच्छे से अप्लाई कर दिया. यस, अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपना मस्कारा. अगर आप अपने लिए कोई मस्कारा लेना चाहो तो आप मेबलिन का मस्कारा ले सकते हैं. वो बहुत सही होते हैं. Okay, so now I'm using any powder brush, any clean brush, and I'll pick some TL. I have already picked some TL, and I'll dab off the TL onto the area where I've applied the mascara. Okay? So I've dabbed on some TL. You can apply some cotton also. ये सबसे easy technique है क्योंकि TL से किसी को कोई issue नहीं होगा बाद में. तो अगर आप अपने लैशेस को बड़ा दिखाना चाहते हो तो अभी उसकी टेक्निक बता रही हूँ. सबसे पहले हमें अप्लाई करना है. Apply your spoolie just in the inner root. मैंने यहाँ पे लगा के छोड़ा and then मैंने ऊपर लिफ्ट किया. ठीक है? तो मैंने इसे रूट पर अप्लाई किया है और फिर मैं उसे लिफ्ट कर रही हूँ रूट पे लगा के. तो सीधा सीधा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे क्लम्पी होगा. फॉर अ मोर फिनिश्ड एप्लीकेशन यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द रूट एंड देन पुल इट ऑफ. ठीक है? And you can already see the difference because she have negligible
Lashes? No, she have beautiful lashes. Should I do it on the mustache also? Chalo. So yes, I hope everybody is liking the look. Saloni, can you explain it in Hindi also? या श्योर. तो अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले मस्कारा अप्लाई किया. मस्कारा अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर टीएल का मतलब है ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर लूज पाउडर. आप उसको अप्लाई करोगे थोड़ा सा. एक बार हम लोगों ने उसको अप्लाई किया, उसके बाद आप वापस से आपका मस्कारा यानी कि स्पूली लोगे. मस्कारा भी नहीं, जो स्पूली होगा वो लोगे. Now you can And leave. बिल्कुल आपके जो रूट्स होंगे वहां से स्टार्ट करोगे एंड ऊपर तक जाओगे. ओके, बिल्कुल फ्रंट में ऊपर ऊपर से ही नहीं स्टार्ट करना है, बिल्कुल रूट से स्टार्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है. ओके, तो ऐसे करोगे आप तो आपको एक अच्छे बड़े लैशेस का लुक मिलेगा बिना किसी फेक लैशेस के. नाउ आई नो Yes, द ट्रिक Saloni. एंड आई एम गोना फॉलो इट एवरीवेयर. So do we have any comments from the students? Are they liking it from the audience also? I think यहाँ पे काफी सारे students, so they have attended some sessions with us. And Hanji, so yeah, यहाँ पे everybody is liking the look. Yes, everybody is liking the look. सबको बहुत ही सही लगा था. They were like बहुत प्यारा look है. अब हम भी ये सब जगह करेंगे. So everybody is on my side. Everybody is gonna wear this look everywhere now. कहीं भी जाना This is होगा one मैं of the यही best करके options. Hardly 5 brushes, even if a professional wants to do it, even if somebody else for their everyday look, I think this is perfect. आप इसमें हमेशा variations कर सकते हो. You can change the eye makeup color, you can change the liner color, you can change your lip color, you can change your blush colors, and yeah, that would do for everybody. Yes. Till then, do we have any other queries? I think we have taken most of the queries, and I think we'll be taking the other queries on the app because we have already exceeded like half an hour. And yeah, we need to end the session now. So yeah. So now, as we are done with the session, I think we have another expert session coming over from tomorrow itself. So yeah, if you want to learn more about the glitters, the application of different eye makeup, the cut crease and different color applications, you can definitely join me there from tomorrow on. And yeah, I think everybody loved the session. And till then, I think it's time to leave for me also, and it's time to leave for us. So yeah, yes, Saloni, you can follow. Thank you so much, Srishti. So yes, guys, if you all have liked and loved the session, please go and join the session that is starting tomorrow. And Srishti will be your trainer there. For that, you can just go to the description box, and description box में आपको एक link मिलेगी upcoming courses की. वहाँ पे जाकर के आपको सृष्टि का कोर्स मिल जाएगा. कल से स्टार्ट हो रहा है. आप वहाँ पे उनको ज्वाइन कर सकते हैं सृष्टि को, एंड वो आपको कट क्रीज सिखाएंगी, ग्लिटर सिखाएंगी. एंड आप देख ही चुके हो कितनी सही टीचर हैं, तो भाई मजे ही आएंगे. So yeah, you all can join us there, and I hope that you all will. And if you have liked and loved the session, please go on Google Play Store and rate us. For the recording part, I will repeat once again, the recording will only and only be available on the app. So if you want to watch the recording, go on the app. You will need to pay us 5 rupees and you will get lifetime access to the recording. Okay? तो अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ ऐप पे अवेलेबल होंगी, एंड उसके लिए आपको हमें 5 रुपीज पे करना पड़ेगा. अगर आप हमें 5 रुपीज पे करते हो तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एंड आप लाइफ टाइम उसको देख सकते हो, एंड लाइफ टाइम हम लोग ये मेकअप करते रहेंगे. तो ये करते रहेंगे. You don't have to rewatch. Yeah, specifically the skincare. हाँ, याद ना होना है. तब तक and also specifically with the skincare. हाँ, स्किन केयर का बहुत हो जाएगा ना. स्किन केयर भूल जाएंगे यार कि कौन से वाले के लिए क्या यूज करना, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग बहुत हेल्पफुल होंगी. एंड आई होप आप में से बाकी सबने नोट्स भी बनाए हैं. एंड आल्सो रिकॉर्डिंग्स आर हार्डली $5. So yeah, so I think it's time to leave for me. So I think yeah, so bye everyone. So it was an amazing session with you guys, and yeah, thank you for hosting such an amazing session, Saloni. Welcome, Srishti, and I love the session. Okay, bye-bye. Bye-bye. So yes, everyone, bye-bye. See you all in some other courses, and I hope that you all are going to join us tomorrow.